Hello dear students, welcome back in Electrical Substation Practices, that is ESP lecture series. This is our lecture number 23 and the today's topic is maintenance of capacitor bank. In the previous lecture, we studied about the wave trap, in which we studied the functions of wave trap. Wave trap is used to prevent the high frequency signal from entering the neighboring line, and its need is carrier current to flow only in a protected line for a communication between different substations. Also, we studied the power line carrier communication, that is PLCC, and also studied its advantages and disadvantages also. So, in this lecture, we are going to study about the precautions taken while carrying out the maintenance of capacitor bank in substation. The course outcome is maintain the substation equipment, and the learning outcomes are means after watching this video, you will be able to explain the precautions taken while carrying out the maintenance of capacitor bank in the substation. Precautions taken while carrying out the maintenance of capacitor bank in a substations are: number 1, clearance and grounding, in which after a capacitor bank is de-energized, there will be a residual charges in the units. Therefore, wait at least 5 minutes before approaching it to allow a sufficient time for the internal discharge resistor in each capacitor unit to dissipate the stored energy. मतलब जब भी कैपेसिटर बैंक को डी एनर्जाइज करने के बाद उसमें कुछ रेसिडुअल चार्जेस रहते हैं, तो इसलिए वो चार्जेस भी पूरे डी एनर्जाइज होने के लिए हमको 5 मिनट तक वेट करना पड़ेगा ताकि जो रेसिडुअल चार्जेस है वो निकल जाए. These resistors are designed to reduce the voltage across the individual capacitor unit to less than 50 volt within a 5 minutes. Even after grounding, it is recommended that individual capacitor unit be shorted and grounded before personnel come into the contact with them to ensure that no stored energy is prevent. और इसके बाद भी हम क्या करते हैं, जो हमारे कैपेसिटर जो यूनिट है उनको शॉर्ट करके उसको ग्राउंड कर देते हैं, ताकि कोई पर्सन उसके कांटेक्ट में आने के पहले ही अगर हमने उसको शॉर्ट और ग्राउंड कर दिया तो उससे हमारी सेफ्टी मतलब उसको सेफ्टी मिलेगी. वहां पे जो डिस्चार्ज करंट है वो ग्राउंड में डिस्चार्ज हो जाएगा. सेकेंड वन प्रिकॉशन इज bulge capacitor units. तो one of the failure modes of the capacitor using is bulging. bulging मतलब जैसे कि हमको पता है बैटरी क्या हो जाती है, फूक जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं bulging. And excessive bulging unit indicates the excessive internal pressure caused by overheating and generation of gases due to probable arcing condition. तो ये बल्जिंग क्यों होता है, क्यों अपनी बैटरी फूक जाती है, क्योंकि इसके अंदर हीट डेवलप होती है और हीट की वजह से वो इंटरनल प्रेशर जनरेट करती है, जिसकी वजह से बैटरी बल्ज हो जाती है. दिस यूनिट शुड बी हैंडल्ड केयरफुली. और ऐसे जो हमारी बल्ज बैटरीज है उसको केयरफुली हैंडल करना जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो फूट गई तो उस कंडीशन में वो हार्मफुल हो सकती है. तो the manufacturer should be consultant regarding the handling of the bulge unit. तो उसको अगर वो बल्जिंग बैटरीज को अगर हमको हैंडल करना है तो उसके लिए हमको मैन्युफैक्चरर को बुलाना पड़ेगा उस बैटरी को हैंडल करने के लिए. थर्ड वन प्रिकॉशन इज लीकिंग फ्रॉम द कैपेसिटर यूनिट. Another mode of failure in the capacitor bank is leaking due to the failure of cans. कभी कभी क्या होता है, कैपेसिटर बैंक
लीक हो जाती है, तो इससे भी हमको प्रोटेक्शन मतलब प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा. व्हेन हैंडलिंग द लीकिंग फ्लूइड, अवॉइड द कॉन्टेक्ट विद द स्किन एंड टेक मेजर्स टू प्रिवेंट एंटर इनटू द सेंसिटिव एरियाज सच एज आईज. तो अगर लीकिंग होते हैं तो वो लीकिंग फ्लूइड अगर हमारे आईज में चला गया या फिर स्किन पे चला गया तो वो हार्मफुल हो सकता है. तो इसके मतलब इससे बचने के लिए हमको प्रिवेंटिव मेजर लेना पड़ेगा. हैंडलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ कैपेसिटर इंसुलेटिंग फ्लूइड शुड कंप्लाई विद स्टेट, फेडरल एंड लोकल रेगुलेशंस. Fourth one, precautions on re-energization of capacitor bank, मतलब फिर से उसको चार्ज करना. When returning to service, verify that all ground connection that are installed for the maintenance purpose are removed. तो जो हमने मतलब उसको मतलब मेंटेनेंस के वक्त उसको क्या करते हैं, ग्राउंड कर देते हैं. तो जब हम सर्विस में फिर से ला रहे हैं मेंटेनेंस के बाद, तो हमको देखना पड़ेगा कि जो भी ग्राउंडिंग कनेक्शंस वगैरह किए थे वो सब निकाले हुए हैं कि नहीं. Allow a minimum 5 minutes between de-energization of the capacitor bank and re-energization of the capacitor bank to allow enough time for store energy to dissipate. और हमको एक बार मतलब उसको डी एनर्जाइज करने के बाद तुरंत उसको एनर्जाइज नहीं करना पड़ेगा, उसको 5 मिनट के बाद एनर्जाइज करना पड़ेगा ताकि उसमें जो भी स्टोर एनर्जी है वो डिसिपेट हो जाए. Fifth one is the initial inspection, measurement and energization procedures. During the initial inspection, before energization of the capacitor bank, the following measures should be taken. Measure 1. Verify proper mechanical assembly of the capacitor unit. Clearance as per the electrical cord and soundness of the structure of the capacitor bank. तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि उसका मैकेनिकल असेंबली को वेरीफाई करना पड़ेगा. मैकेनिकल असेंबली में क्या क्या रहेगा, कैपेसिटर यूनिट्स रहेंगे, उसके बीच में जो क्लियरेंस है इलेक्ट्रिकल कॉर्ड के बीच में वो बराबर है क्या, उसकी साउंडनेस ऑफ द स्ट्रक्चर जो है कैपेसिटर बैंक का वो भी प्रॉपर है कि नहीं है, ये सब वेरीफाई करना पड़ेगा. मेजर 2. इट मे बी यूजफुल to measure the capacitance of the bank and keep the measurement as benchmark data for future comparison. उसको जो हम मेजर करेंगे कि बैटरी का कैपेसिटेंस कितना है और स्टैंडर्ड जो कैपेसिटेंस वैल्यू है उसके साथ बेंचमार्क के साथ उसको कंपेयर करेंगे, उसको नोट डाउन करके रखेंगे फ्यूचर कंपैरिजन के लिए. मेजर 3. चेक द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन फॉर प्रॉपर इंस्टॉलेशन एंड गुड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट. यस, हमको कोई भी बैटरी लगाते वक्त उसके प्रॉपर कनेक्शन है कि नहीं है इंस्टॉल करने के पहले ये देखना पड़ेगा. एंड वेरीफाई दैट ऑल टर्मिनल कनेक्शंस आर tightening properly. Check the individual fuse connection to ensure that they are tight and make good contact. फ्यूज भी देखना पड़ेगा कि वो प्रॉपर टाइट और गुड है कि नहीं है. 7. Immediately after energization, verify the voltage increase on the terminals and compare it with the calculated values. Also, measure and verify if the supply voltage, phase current and the kVR of the capacitor bank are within the allowed limit. जो भी रेटिंग्स है वो प्रॉपर है कि नहीं है, जो हमने लिमिट रखी है उतने है कि नहीं है, लिमिट में है कि नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा. 6th precaution is periodic inspection, measurement and maintenance. The substation and the distribution capacitor bank should be inspected and electrical measurement be made periodically. And the frequency of inspection should be determined by local conditions such as environmental factors and type of controllers used to switch the capacitor on and off. 7th, visual inspection. Visual inspection of the capacitor bank must be conducted for blown capacitor fuses, capacitor unit leaks, bulge cases, discolored cases and ruptured cases.
तो विजुअल इंस्पेक्शन के अंडर में क्या दिखेगा हमको कि वो जो कैपेसिटर बैंक है वो कहीं बल्ज तो नहीं हुई है, वहां के फ्यूजेस ब्लोन हुए हैं क्या, कैपेसिटर में कहीं लीक तो नहीं हुआ है, उसकी डिस्कलर्ड तो नहीं हुआ है। तो ये सब हमको विजुअल इंस्पेक्शन से पता चलेगा। एंड इंफ्रारेड कैमरा इज वेरी यूजफुल फॉर इंस्पेक्टिंग द सबस्टेशन इक्विपमेंट फॉर over voltage joint and surfaces, and record can be maintained for future comparison. तो इसमें इंफ्रारेड कैमरा भी लगाया रहेगा सबस्टेशन के इक्विपमेंट को देखने के लिए कि वो उसके जॉइंट वगैरह प्रॉपर है कि नहीं है, ताकि उसको फ्यूचर में उसका रेफरेंस ले सके हम। पोल माउंटेड कैपेसिटर यूनिट शुड बी एग्जामाइंड फॉर एक्सटीरियर करोजन। तो करोजन नहीं होना चाहिए, इसलिए पोल माउंटेड कैपेसिटर भी लगाते हैं। 8th वन इज द फिजिकल इंस्पेक्शन एंड मेजरमेंट। फिजिकल इंस्पेक्शन मतलब उसको फिजिकली इंस्पेक्ट करना और उसकी रीडिंग लेना। फिजिकल इंस्पेक्शन एंड मेजरमेंट शुड इंक्लूड लूज कनेक्शन, ओवरहीट, लीड वायर एंड फॉल्टी फ्यूज ट्यूब। Fuses should be inspected for evidence of overheating and other such damages. The protection device should be inspected for the proper setting, including the position of the current transformer and the potential transformer. The capacitance of the bank should be measured and compared with the previous measurement. तो ये सब आएंगे हमारे फिजिकल इंस्पेक्शन में कि कहीं वहां पे उसको लूज कनेक्शन या फिर ओवर हीटिंग लूज वायर तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। ऑल्सो उस कैपेसिटर बैंक का कैपेसिटेंस को फिजिकली उसको मेजर करना पड़ेगा और प्रीवियसली जो हमने रीडिंग लिए थे, मेजर किए थे, उसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। सो लेट अस समराइज आवर टुडेस सेशन। इन दिस सेशन वी understood the precautions taken while carrying out the maintenance of capacitor bank in substation. इसमें हमने देखा कि clearance and grounding हमको चेक करना पड़ेगा। बल्ज कैपेसिटर यूनिट शुड बी हैंडल केयरफुली। अगर कोई बैटरी वगैरह बल्ज हुई है तो उसको केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा। हैंडलिंग द लीकिंग फ्लूइड, अवॉइड कॉन्टेक्ट विद द स्किन एंड सेंसिटिव एरिया। अगर लीकिंग हो रहा है वहां पे तो उसको अवॉइड करना पड़ेगा कि वो स्किन और सेंसिटिव एरियाज के कांटेक्ट में ना आए, उसको प्रॉपरली हैंडल करना पड़ेगा। वेरीफाई दैट ऑल ग्राउंड कनेक्शन दैट वेयर इंस्टॉल फॉर द मेंटेनेंस पर्पज आर रिमूव। मेंटेनेंस के लिए जो ग्राउंड कनेक्शन बनाए हुए थे वो सब रिमूव हो जाने चाहिए जब हम उसको फिर से इंस्टॉल कर रहे हैं तब। 5th वन था कीप द मेजरमेंट एज बेंचमार्क डेटा फॉर द फ्यूचर कंपैरिजन। फ्यूचर में कंपेयर कर सके इसलिए वो जो रीडिंग मिल रहे हैं उसको बेंचमार्क करके हमको लिख के रखना पड़ेगा। चेक द इलेक्ट्रिकल कनेक्शन प्रॉपर है कि नहीं है, ये सब चेक करना पड़ेगा। एंड वेरीफाई दैट ऑल टर्मिनल कनेक्शंस। असाइनमेंट फॉर द टुडे सेशन, एक्सप्लेन द प्रिकॉशंस टेकन while carrying out the maintenance of capacitor bank in the substation. POs satisfied by the today's lecture are PO1, PO2 and PO7. Thank you for watching this video and keep learning.